Hello friends, today I am starting a new topic, platelets or thrombocytes. Let's start. Thrombocytes, also called as platelets. The thrombocytes are the piece of the very large cells in the bone marrow. ये एक large cells है bone marrow की and it called the megakaryocytes. They help form blood clots to stop bleeding and to help the wounds heal. And these are made in our bone marrow and the sponge like tissues inside our bones. Bone marrow contains the stem cells that develop into the RBCs, WBCs and platelets. In my previous video I already discussed about it, what are the stem cells, how they develop, the different stages of the red blood cells, how to produce white blood cells. So platelet is a very large cells and it is made in our bone marrow and it look like the sponge like tissue inside our bone. The structure of platelets you can see in the side. The platelets under the electron microscope, alpha granules, dense granules, glycogen, microtubules, mitochondria are present. Now we can see the structure or composition of the platelets. Why it is called the platelets? Because it look like the small plate like structure. We can break down the term thrombocytes. The term thrombo means clot and cytes means cells. And the size of the platelet is 2 to 4 micrometer. And the shape of the platelet is spherical or oval discoid. And the volume of platelets is 5.8 micrometer cube. And it is a colorless, no color. The mature platelets under the electron microscopic, it's look like this. Now come to the next point, thrombosis. Thrombosis is the formation of the blood clot, or it is also known as a thrombus within a blood vessel. It prevents the blood from the flowing normally throughout the circulatory system. ये prevent करता है blood को normally through the circulatory system. And blood clotting also known as the coagulation. Blood clotting को ही coagulation बोलते हैं. Is the body's first line of defense against the bleeding. ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है अगेंस्ट द ब्लीडिंग. व्हेन वी हर्ट आवर सेल्स आर कॉटिंग सिस्टम फॉर्म्स अ प्लग और सील टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूजिंग टू मच ब्लड. आवर बॉडीज ऑफन ब्रेक डाउन द क्लॉट्स आफ्टर वी हैव हील्ड, बट समटाइम्स क्लॉट फॉर्म इनअप्रोप्रिएटली और फेल टू डिजॉल्व आफ्टर एन इंजरी. अ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स एंड स्टेज इन द ब्लड वेसल इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसिस. जब कभी भी हमको इंजरी हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग को कोगुलेशन बोलते हैं. ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है. सेकंड, अगर हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम क्या करता है, प्लग और सील उसमें क्लॉट फॉर्म कर देता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है. इवन ऑफन समटाइम ये भी होता है कि आवर बॉडीज ब्रेक डाउन द क्लॉट्स आफ्टर वी हैव हील्ड, बट समटाइम ये भी हो सकता है कि इनप्रॉपर्टली या तो फेल हो जाती है इंजरी डिजॉल्व होने के लिए क्लॉट्स, तो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म्स एंड स्टे इन द ब्लड वेसल और वहीं पर रह जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रोम्बस. नाउ वी कैन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स. तो दे परफॉर्म मैनी फंक्शन. द फर्स्ट फंक्शन and the most important function of platelet is formation of platelet plugs in hemostasis. So their activation, adhesion, aggregation or accumulation, cohesion or the plug formation done by the platelets. And they also perform the supporting coagulatory mechanism and also perform phagocytosis function, and it helps to storage and transportations of substance from the lungs to tissue. Now we can describe some disorders. Lots of different groups of disorder affecting the platelets. Sometimes with a physiological or sometimes it be a pathological problems.
Here we describe the first disorder, that is a thrombocythemia. Thrombocythemia, where there are too many platelets in circulation. The minimum range of the platelets is 1,50,000. तो जब भी अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से बहुत हाई है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइथीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. In this condition, the platelets in circulation is very low, or decrease in the platelets is called the thrombocytopenia. Now, other disorder is the dysfunction. It could not perform properly, where there is a correct number of platelets in circulation but they do not work properly. Here the no problem in the platelets count, but the main problem is they do not perform properly. So डाई फंक्शन का मतलब ये है कि वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे. काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फंक्शन में प्रॉब्लम है. तो here we can see the different disorder of platelets. So guys, if you like my video, please share and subscribe my channel, and thank you.